workshop. I'm going to tell you about good touch and bad touch. What is good touch? What is bad touch? Look at these pictures. Have you seen the mama hugs their children? Yes. This is a good touch is a loving touch, while a bad touch cross boundaries. Looks like So now I'm going to tell you about what it is. आपकी मम्मी पापा जब आपको प्यार करते हैं तो आपको गुड टच का फील कराता है। अच्छा टच होता है जब अगर मैं किसी बच्चे को ऐसे करूँगी तो अगर मैं कहूँगी वेल डन, दिस इज गुड टच। ओके, व्हेन आई like you do like this is also a good touch. But bad touch is someone touch their other place. This is bad touch. Bad touch. And what is bad touch? Like someone touch you like this. This is good or bad? Bad. क्योंकि आपको कोई ऐसा टच नहीं कर सकता है जो आपको प्यार से टच करेगा वो गुड टच होगा। जो आपको अच्छा से फील नहीं करता है, कोई आपको छूता तो अच्छा फील नहीं होता, बैड टच होता है। जब कोई आपको बैड टच करता है तो आपको उसको नो नो कहना है, मना करना है। और जब कोई ऐसा करता है तो आपको घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बताना है। ओके, आप सबके पास नहीं जाते ना, आप जिनको जानते हैं उन्हीं के पास जाते हैं। जब आप किसी और स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो उनको आप हेलो हाय कहते हैं, ठीक है। लेकिन हेलो हाय के अलावा उनसे ज्यादा बातें नहीं करनी है, उनके पास नहीं जाना है। ओके, नाउ टेल मी, दिस इज गुड टच और बैड? ओके, दिस इज गुड टच और बैड? अच्छा, ओके, दिस इज गुड टच और बैड? आपको समझ में आता है क्या गुड टच होता है और क्या बैड? ओके, थैंक यू।